Hello everyone, welcome to my channel Learn with Fun. So today I am going to teach you ascending and descending order. So first we will know about what is ascending order. So let's see one example. He is a boy, his name is Chika, and she is a girl, her name is Mika. They are very good friends. They wanted to play together. Okay, so this boy is standing downward the stair and this girl is standing top on the stair. Okay, so children, question arises, what will Chika do to meet his friend Mika? Okay, Chika क्या करेगा Mika से मिलने के लिए, कैसे जाएगा ये? So Chika need to climb up the stair. So he took one by one step. Okay, he goes first stair, then second, then third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh, then eighth, and finally Chika reached to the Mika. Okay, finally Chika reached to his friend Mika. Okay, so children, we observe that Chika take smaller step to greater step. He goes downward direction to upward direction. Okay, he goes 1 2 3 4 5 6 7 8, which is smaller to greatest. When we go smaller to greatest, it's called ascending order. Okay, when we go smaller to greater, it's called ascending order. Okay, so we will write like this: 1, then 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7, 8. Okay, so Chika took one step, then second, then third. So 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3, 3 is smaller than 4. So we will write like this also: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay children, understand? When we go smaller step to greater step, it's called ascending order. Okay, so when we arrange the numbers in smaller to greater, it's called ascending order. Okay children, understand? जब हम नंबरों को स्मॉलर से ग्रेटर में सजाते हैं तो उसे ascending order बोलते हैं. Let's see some example more. Okay, so children, let's solve these questions. Okay, so we have to arrange this number in ascending order. In ascending order, when we arrange number smaller to greatest, it's called ascending order. So we have to arrange in this number in ascending order. Okay, so first we have to compare these numbers. Okay, who is smallest number? Okay, so first number is 5 and then 1. So we have to compare this number. 5 is greater and 1 is smaller. So we have 1. Okay, so 1 and 8. We have to compare this number. So which number is the smallest? 1, and this is greatest number. Okay, then 1 and 6. So we have to compare this number. This number is smallest and this number is greatest. So we will write here 1. 1 is smallest number. Okay, then we will compare 5 and 8. Which number is the smallest? 5. So we will write here 5. Then 8 and 6. We have to compare 8 and 6.
smallest, 8 or 6? 8 is greatest number and 6 is smallest number. Okay, so see, we will write here 6 and here 8. Okay children, understand? Let's see one example more. When we have two digit number, so first of all we have to compare tens place number. Okay, so we have 10 place numbers, 1 1 1 1 1, all of us one number. Okay, we have tens place in one number. Okay, so we will write here 1. Then compare ones place number. Okay, so we have 9 and 8, so we have to compare 9 and 8. Which number is the smallest? 8. Then we have to compare 8 and 1. Okay, so which number is smallest? 1, so we have to leave 8 number. Okay, then we have to compare 1 and 3, so which number is smallest? 1. Okay, so then we compare 1 and 5 number, so which number is smallest? 1. 5 is greatest, so we will write here 1. Okay, again we will compare 9 and 8, so 8 is the smallest number. Okay, again we will compare 3. 3 is the smallest number, so we will leave 8 number. Okay, again we will compare 3 and 5, so 3 is the smallest, so we will write here 30. Okay, so children, next we will compare 9 and 8, so 8 is the smallest. Then compare 8 and 5, so which number is the smallest? 5. 8 is greatest number, so we will write here 1 5 15. Okay, then 2 cats I have left, so we will compare 9 and 8 number, so 9 is greater number and 8 is the smallest number, so we will write here 18 and here 19. Okay children, hope you understand. So children, let's solve these questions. Okay, so we have 15, 26, 18, 35, 12 numbers. Okay, so first we have to compare 10 place number. Okay, so 10 place में कौन सा नंबर है? 1. ओके, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 सबसे छोटा नंबर है ना? 2 से यहाँ 2 है, तो 1 सबसे छोटा नंबर है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे. ओके, देन वी कंपेयर 5 and 8. So 5 is smaller number, 8 is greater number. ओके, फिर हमारे पास क्या है? 1 का एक और भी है, तो यहाँ पे 2 है. ओके, so we have to compare 5 and 2 numbers. Okay, so 2 is smaller number, so we will write here 2. Okay, again we will compare 5 and 8, so 5 is smaller number, so we will write here 15 and 18. Okay, अब 26 है and 35 है, so we will compare 10 place number, so 2 and 3 we will compare, so 2 is smaller number and 3 is greater number, so we will write here 26. We have to no need to compare 3 and 6 and 5 because 10 place number is already 2, which is smaller number. Okay, so we will write here 35. Okay, understand children? Then again we have 3 digit number. Okay, so first of all we have to compare 100 place number. Okay, so here is 1, 1 and 2, so 1 is a smaller number, so we will write here 1. Then again we will compare 10 place number, so here is 8, 7. Okay, 8 and 7, so we will compare 8, 7. इससे तो कंपेयर करना ही नहीं है क्योंकि ये तो 200 प्लेस में ये तो बड़ा है ना, इसको छोड़ देंगे. ओके, सो 8 and 7 में कौन सा स्मॉलर है? 7. ठीक है, तो यहाँ पे 172 लिख देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 प्लेस में पहले ही ऑलरेडी छोटा नंबर हमें मिल चुका है, तो हमें 1 प्लेस का कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं. सो वी विल राइट हियर 181. ओके, देन 275. ओके, hope you understand children what is ascending order. When we go smaller to greater, it's called ascending order. Now we will learn descending order. What is descending order? Okay, so
children, now I'm going to teach about descending order. Okay. So Chika wants to go back to his home. Okay. Chika अब वापस अपने घर जाना चाहता है. So he need to descend the stairs, है ना. ये अब इसको क्या करना है कि सीढ़ियों से नीचे आना है इसको. ठीक है. तो ही स्टार्ट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्टेयर. ये सीढ़ियों से उतरना शुरू करता है. तो अब बच्चों एक चीज़ देखो, जब ये सीढ़ियों से उतरना शुरू करता है तो ये नंबर घटते जाते हैं ना. पहले 8 पर जाता है, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये नंबर्स घट रहे हैं. ये टॉप से बॉटम में जा रहा है. ओके. सो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम और ग्रेटर टू स्मॉलर, इट्स कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. तो ये चीका सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गया है ना. ये नीचे आ गया. सो चीका इज स्टैंडिंग डाउनवर्ड द स्टेयर. ओके. सो चीका कैसे आया नीचे? टॉप टू बॉटम. ओके. सो व्हेन वी गो ग्रेटर टू स्मॉलर, इट्स कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. ग्रेटर टू स्मॉलर. ओके. तो नंबर्स क्या हो रहा है? ग्रेटर टू स्मॉलर में घट रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते जाते हैं ना. छोटे से छोटा, छोटे से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाता है. ओके. तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. जो नंबर घटते जाता है, बड़ा से छोटा, फिर छोटा, उससे छोटा, तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ओके. व्हेन वी अरेंज द नंबर इन ग्रेटर टू स्मॉलर, सो इट्स कॉल्ड descending order. Okay. So we will write here, when we, so understand children, when we arrange the numbers in greater to smaller, it's called descending order. Okay children. So let's practice some questions. Okay. So let's solve this question. Okay. And we have to arrange these number in descending order. Okay. So let's find greater number. Okay. So greater number ढूंढने के लिए हमें numbers को compare करना पड़ेगा. So let's compare. Okay. Here is 4, 7. So 7 is greater number. Okay. Then 5. So 7 is greater number. 5 is smaller number. Again 9. So 9 is greater than 7. Okay. So we will write here 9. Okay. Then we have 3 numbers. 4, 7, 5. So let's compare. 7 is greater number. Then 4 and 5. So we will write here 7. Okay. And 4 and 5. ठीक है. तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे. तो 5 क्या है? 4 से ग्रेटर है. So we will write here 5 and here 4. So children, आपको अच्छे से समझ में आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जब हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं, नंबर को अरेंज करते हैं, तो हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं. ठीक है. चलो कुछ और सॉल्व करते हैं ना. So children, let's solve 2-digit number. Okay. So जब हम 2-digit number को solve करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं 10 and 1s प्लेस को. तो पहले हम देखेंगे 10 प्लेस में कौन सा डिजिट है. ओके. सो here is 1, 1, 1 and 2. So 2 is greater. ओके. 1 is smaller. तो हमें कौन सा नंबर ढूंढना था? ग्रेटर. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको? 20. ओके. Then compare 15 and 18 and 19. Okay. तो अब बताओ 5, 8 and 9 इन तीनों में कौन बड़ा है? 9. So we will write here 19. Then 5 और 8 में कौन बड़ा है? 18 and then 15. Okay. इस मैनर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे ग्रेटर टू स्मॉलर. ओके. लेट्स सॉल्व इट. So first we will compare 10 place digit. Okay. Here is 3, 1, 1, 2. Okay. So 3 is greater. So first we will write here 35. Then 2 is greater. So we will write here 25. अब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है. तो हम वंस वाले प्लेस को कंपेयर करेंगे. यहाँ 0 है, यहाँ 9 है. तो 9 बड़ा है. तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे. Then 10. Okay children. अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम इंक्रीज करते हैं छोटे से छोटा, छोटे से फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना. तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. when goes to smaller to greater, it's called ascending order. And when we goes
greater to smaller, it's called descending order. Okay children, hope you understand. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much. Bye bye.